we are going to talk about. आज हमें करना है बच्चों, आज क्या करना है हमें फाइंड आउट करनी है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। हमें फाइंड आउट करनी है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। व्हेन यू आर बर्निंग समथिंग, तो उस बर्निंग से कितना आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, या डेफिनेटली बर्निंग में तो रिलीज ही होगी, तो रिलीज हो रही है और पर मोल के हिसाब से कितनी रिलीज हो रही है, एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करेंगे। एंथैल्पी चेंज ऑफ combustion, when 1 mole of any substance is going to be combust in the presence of excess oxygen, right? You can use this delta HC for combustion, right? So this is what we are going to talk about in today's class. ये experimental एक approach है जो सामने आपके पास बनी हुई है, and we know that what is this? This is polystyrene cup. This is what polystyrene cup. Why we are using this? Because it is heat insulator. तो बहुत कम heat ये release करता है, इसी वजह से हम इसमें चाय कप में, इस चाय के कप में भी यूज करते हैं, कॉफी के कप में भी हम इसको बाहर मार्केट्स में यूज करते हैं। इस पॉलीस्टाइरीन कप, राइट। साथ साथ वी नो दैट दिस इज व्हाट थर्मामीटर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, तो टेम्परेचर का काम यहाँ पर बहुत जरूरी है। वी नीड टू सी दैट क्या है भाई, कितना एनर्जी जो है आपके पास रिलीज हुई है, तो उसके लिए टेम्परेचर फाइंड आउट करना जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट, इसके अंदर हम फ्यूल लेंगे, ठीक है, जिस फ्यूल को भी हम चेक करना चाह रहे हैं वो फ्यूल इसके अंदर हम सपोज करेंगे। साथ साथ इसके अंदर हम पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर हम लेंगे वाटर, इसके अंदर हम लेंगे वाटर और उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, ठीक है, और फिर हम इसके अंदर एनर्जी चेक करेंगे। सो वी आर टेकिंग वाटर इनसाइड द polystyrene cup and it can be volume or it can be mass, because we know that कि भाई आपके पास जो पानी होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो उसका वॉल्यूम और मास सेम है। सो यू कैन टेक द मास ऑफ वाटर और द वॉल्यूम ऑफ वाटर, एनी वन ऑफ दैट, राइट, दिस वाटर। और इसमें मैंने क्या लेना है बच्चों, इसमें मैंने लेना है फ्यूल। ये है मेरे पास इसके अंदर फ्यूल, राइट। अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, और वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो कि हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए, by which we can do the calculation. The first thing that you should have is mass or volume of water. You should have this mass or volume of water. ये आपके पास होना चाहिए। Secondly, जब आपके पास पानी होगा तो उसका आप टेम्परेचर नोट करेंगे, so that would be the initial temperature of water. आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है पानी का कि भाई कितना था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, you need to measure the initial mass of fuel. You need to check the initial mass of fuel as well, कि आपने जब इनिशियली इस बर्नर को लिया है, इस बर्नर के अंदर जो आपने जो मास लिया हुआ वो कितना है, आप बर्नर के साथ ही उसको वेट कर दें, ठीक है ना। आफ्टर दैट आप उसको हीट करोगे, हीट करना शुरू करोगे, जलाना शुरू करोगे अपने फ्यूल को। जब वो फ्यूल जलेगा तो उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी पानी को गर्म करेगा। जब तक आप इसको करना चाह रहे हैं आप जब तक करें, उसके बाद आप इसको जब स्टॉप कर देंगे तो आप क्या नोट करेंगे, यू नीड टू फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ओवर देयर, कि जब आपने उसको बंद किया है तो उस वक्त फाइनल टेम्परेचर कितना था। यू नीड टू मेजर दिस एंड ऑल्सो द लास्ट मास, ठीक है ना। इनिशियली जो आपको पता है मास ऑफ फ्यूल जो है प्लस बर्नर, आप इसको कर लें, प्लस बर्नर आपको पता था। एंड आफ्टर दैट आफ्टर बर्निंग मास भी आपने लेना है। आफ्टर बर्निंग you need to take mass of fuel plus burner, mass of fuel plus burner भी आपको चाहिए होगा। इसके साथ साथ one चीज is fixed, which is specific heat constant. Specific heat of water is 4.18, which is constant. It is not going to be changed. It is 4.18 what बच्चों, 4.18 joules per gram per Kelvin, right बच्चों। yes बच्चों, is that right? yes sir. चलें तो yes, मेरे पास ये एक एग्जाम्पल मौजूद है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है that you are going to combust a fuel over here. The fuel is It is neutralization.
Just give me a minute. Enthalpy change वाला सवाल मेरे पास था, कहाँ चला गया? Yes, here it is. So बच्चों मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस में जो है कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. The question is saying that you have 150 grams of water. So the information here is 150 gram आपके पास water है. This is 150 grams. ठीक है. जब आपने इसका इनिशियल टेम्परेचर लिया, so it is 19.5. इनिशियल टेम्परेचर इज 19.5 डिग्री सेल्सियस. और आपने जब इनिशियल मास लिया है बर्नर का प्लस फ्यूल, so it was like that कि आपके पास था 121.67 grams, right? And after that when you are burning this you will find कि यार आपका टेम्परेचर जो था वो 45.7 तक increase हुआ है डिग्री सेल्सियस. We don't care about the unit of temperature because we are taking the difference of these. तो डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम डिफरेंस लेंगे इसमें ना, डेल्टा टी लेंगे, हम डेल्टा टेम्परेचर लेंगे. टेम्परेचर का डिफरेंस है तो केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस विल रिमेन सेम. और वो कह रहा है फाइनल मास जो आया आपके पास, आपने बर्निंग जहां एंड किए तो वहां उसका फाइनल मास था 120.62. So these are the informations about question number 1, example number 1. So we need to find out कि भाई इसमें enthalpy change कितना हुआ. So for the solution we know that सबसे पहले हमें चाहिए होगी heat energy, और जो एनर्जी आपके पास रिलीज हुई है या जो यहाँ पर कंबस्शन हुई है तो डेफिनेटली रिलीज हुई है. जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, उसके लिए we need to apply the formula and we know that the formula is mc delta t. और you can see that कि ये है mc delta t, यानी कि m मतलब mass of water, because क्योंकि टेम्परेचर पानी का इंक्रीज हो रहा है तो mass of water आपने यहाँ लेना है. So you can write mass of water and c constant which is 4.18 and the temperature difference. So the mass is 150 and the constant is 4.18 and the temperature difference is the final one is 45.7, the initial one is 19.5. So you can subtract the smaller one from the capital one. So it is 45.7 minus 19.5. It gives you the difference of temperature is 26.2. When you multiply all these three values, बच्चों आपके पास आंसर क्या आ रहा है? Let me check. This is 4.18 into 150 and all this. So it is giving you बच्चों एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास. जो एनर्जी आपके पास रिलीज हुई है it is actually 16,427.4 joules. ये जो एनर्जी आपके पास है ये joules में, you can see this unit that you're using for a specific heat is showing that ये भाई ग्राम, और आप टेम्परेचर डिफरेंस तो खैर है क्योंकि वो तो डिफरेंस है ना, तो केल्विन में है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मास भी आपके पास ग्राम में और एनर्जी जो आएगी फिर वो जूल्स में आपके पास आएगी, right? And after that we can apply the formula for enthalpy change बच्चों. और enthalpy change का formula क्या होता है? It is enthalpy change is actually the amount of energy in kilojoules over the number of moles. यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे आप फ्यूल के, क्योंकि उस फ्यूल के मोल की वजह से ही पानी में इतना टेम्परेचर डिफरेंस आया है. सो ये जो फ्यूल आपने यहाँ यूज किया है, तो सपोज ये फ्यूल कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर ये फ्यूल इन्होंने कहा है कि इट इज इथेनॉल. यहाँ नाम लिखा हुआ है आपके पास, फ्यूल आपके पास इथेनॉल है. तो पहले तो हमें यहाँ पर एक रफ वर्क करना पड़ेगा, और वो रफ वर्क में हम निकालेंगे मोल्स भी, और उसमें हम एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, kilojoules में. So we have 1642.7.4 joules. We can divide it by 1000 to get the Q or heat energy in kilojoules. So it would be 16.4274 kilojoules. ये हमने kilojoules में convert कर लिया इसको. So we can put it over here कि भाई kilojoules में energy आपके पास है 16.4274. आपकी मर्जी है, आप सारे डॉट लिखो या आपको 2 लिखना है या 3 लिखना है, whatever. You can consider 16.43 as well. आप इसको राउंड ऑफ कर दो. फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए we should have the formula for this, mass over mr. And what is the mass? Now the mass use कितना हुआ है बच्चों हमारे पास? यहाँ mass use हुआ है आपके पास 121.67 था इनिशियली, उसमें से यूज कितना हुआ है
हम माइनस कर देंगे फाइनल वाला मास 120.62 ओवर mr, क्योंकि इथेनॉल है तो इथेनॉल होता है C2H5OH, so it is 1 carbon 12 into 2 plus हाइड्रोजन है, ठीक है, आपके पास 6 हाइड्रोजन है तो 6 plus ऑक्सीजन 16 है, so it will be 24 30 46, so the mr is 46 for ethanol. तो हम चेक करते हैं कि इसके मोल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं. so the moles are 121.67 minus 120.662, so it is 1.05. 1.05 mass used हुआ है over 46, so divide by 46, it gives you 0.02282 moles, right? So these are the moles of fuels जो कि हमने यहाँ use किए हैं, so we can put these moles over here. It is 0.02282 moles हमने use किए हैं यहाँ पर. So we can divide the energy in kilojoules, 16.4274 over 0.02282. So it is giving us the enthalpy change. जिसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है? It is 719.86, or you can consider this as 720 kilojoules per mole. Right, and we know that this is the combustion reaction, so this is exothermic. अगर आपको ये नहीं भी पता है, so you can see this during this reaction, the temperature is actually increases. Temperature increase हुआ है तो exothermic reaction है, और exothermic reaction में आपके पास हमेशा enthalpy change negative होता है. So this would be the answer for this question. Right, बच्चों? ऐसी होगा? जी सर. Yes, sir. Any problem to Yes, anyone of? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, so you can ask. पहले आपने एनर्जी निकाली है mc डेल्टा टी से, और अगर पानी का वॉल्यूम भी होता तो भी आप उसको निकाल सकते थे, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम है, ठीक है ना. फिर आपने इसको किलोजूल्स में कन्वर्ट किया, और फिर आपने मोल्स निकाले, क्योंकि इथेनॉल गिवन था तो उसका एमआर से डिवाइड करा दिया, उसके मास को, मोल्स आ गए, एंड देन आपने इन दोनों को डिवाइड करके एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन निकाल ली है एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के थ्रू भी आप ये एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं. डेफिनेटली यहाँ थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, थोड़ा बहुत हीट लॉसेस, लेकिन स्टिल वी कैन डू दिस. जी बेटे. सर हम राउंड ऑफ वैल्यू लिखेंगे या फिर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा तो आप वो बोल सकता है कि भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, या 3 तक लिखो, या 4 तक लिखो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख सकते हैं. अदरवाइज ना गिवन हो तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा आंसर आया वैसे लिख दें. ठीक है. जी सर. ठीक है. सो यू कैन कॉपी डाउन दिस बच्चों, एंड आई एम सेंडिंग सम क्वेश्चंस टू यू. तो आपने जल्दी से उसको सॉल्व करना है, और अगर आपसे नहीं होता है तो डेफिनेटली आई एम हियर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो मैं उसके बाद, पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराऊंगा. तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसको सामने रखूंगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. लेट्स सो बच्चों, as I already told you कि हम लोग कर रहे थे enthalpy change of combustion. तो combustion जब भी आप करेंगे तो उसमें पॉलीस्टाइरीन कप की जगह आप क्या यूज करोगे? मेटल कप, और ज्यादातर हम लोग इसको कॉपर कप भी यूज करते हैं, कॉपर का बना हुआ. बट जब हम इसको करेंगे न्यूट्रलाइजेशन, या जब हम करेंगे फॉर सपोज सॉल्यूशंस की, जब हम एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हो पॉलीस्टाइरीन कप को. ठीक है. तो अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने न्यूट्रलाइजेशन वाला. ठीक है. For suppose you have what you need to find out enthalpy change of neutralization, and this is the last one कि आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो. Enthalpy change of neutralization, and we know that what is neutralization. Neutralization is when acid reacts with base. ठीक है ना. It will form salt and water. तो उस reaction में जो energy change आपके पास होगा उसको आप बोलते हैं enthalpy change of neutralization. तो ये हमें आप करना है. ठीक है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सेम प्रोसीजर होगा आपके पास, वही आपके पास कैलोरी मीटर होगा, वही आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर लगेगा. अब बस मसला ये होगा कि आपके पास यहाँ पानी नहीं होगा, और यहाँ पर क्योंकि कंबस्शन नहीं है तो फ्यूल भी नहीं होगा नीचे. यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ मौजूद है न्यूट्रलाइजेशन का, हम उससे सॉल्व करते हैं इस चीज को. इसमें हमारे पास, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन जो है आपके पास एसिड और बेस जो है रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस गिवन होंगे. For suppose I have a reaction over here, and in this reaction I have a question that I have 50 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube
sodium hydroxide. I have this one, right? And this is going to be added. This solution were added to the same volume and concentration of 250 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube HCl. The same volume and the concentration of HCl, right? When I just do this, we should use polystyrene cup over here, right? Because this is neutralization reaction, there is no need for the combustion, right? So we know the reaction. When HCl reacts with NaOH, it will form what? NaCl and water, right? This is the chemical reaction for this. They told us some information of this. They told us that the initial temperature, this time we have two different liquids. So the initial temperature of HCl, is 17.5 degrees Celsius. And also we have other liquid, which is sodium hydroxide. So initial temperature of sodium hydroxide is 17.9 degrees Celsius. So right now we have two initial temperatures. So what we need to do, we need to take average initial temperature in this. We need to take average initial temperature. So what we need to do यहाँ हमें करना होगा दोनों को प्लस और प्लस करने के बाद हम करेंगे दोनों को divide by 2 because we have two solutions over here. So it would give you 17.7 degree Celsius. This is average initial temperature. Right, बच्चों? Yes, sir. Then they gave us the final temperature as well after the complete reaction over here. They will give you the final temperature as well of the solution. Now this is solution, so it will give you 31 degrees Celsius, the final temperature. Now they are asking for the enthalpy change of neutralization. So बच्चों, for the enthalpy change of neutralization, we know that enthalpy change of अगर मैं neutralization की बात करूं, so we must have what? Energy in kilojoules over the number of moles. And you need to keep remember that right now you have two reactants over here. Right now you have two reactants over here, and in these two reactants we need to put any one of them as a number of moles. So आप याद रखें कि यहाँ पर आप हमेशा यूज करोगे limiting reactant को. जब कभी भी हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बच्चों, आपको याद रखना है कैलकुलेशन हमेशा बेस करती है लिमिटिंग रिएक्टेंट पर, क्योंकि जब आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो एक्सेस वाले का कोई काम नहीं होता, एक्सेस वाला बच जाता है, ठीक है ना. अगर फॉर सपोज मेरे पास अगर 5 kg जो 5 लीटर मेरे पास अगर दूध है और मेरे पास जो चाय की पत्ती है वो सिर्फ 2 लीटर दूध बनाने के लिए है, उसकी चाय बना सकता हूँ मैं 2 लीटर से, तो मेरे पास जो 3 लीटर एक्सेस दूध है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसकी चाय नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास जो पत्ती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर दूध के लिए है, तो बाकी जो 3 लीटर दूध है वो बच जाएगा. सेम एज इट इज अगर आपके पास HCl और NaOH आपस में 1:1 मोल इसके मिलते हैं तो आपके पास NaCl और वाटर बनता है. तो अगर आप HCl के 1 मोल डालें और NaOH के आप 5 मोल्स डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है NaOH के 5 मोल्स डालने से. क्या फायदा है, वो 4 मोल तो वैसे भी बच जाएंगे, उसके रिएक्शन तो एक ही मोल करेगा. तो जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे NaCl की फॉर्मेशन की या वाटर की फॉर्मेशन, आप कितना पानी बना, कितना NaCl बना, या कोई भी गैस कितनी किसी रिएक्शन में बनी, तो वो कैलकुलेशन हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से करते हैं, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होगा कोई भी चीज फर्दर नहीं बनेगी, दूसरा रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहां से बनेगी, ठीक है ना. जब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो चुका होगा, इसलिए बंद होगी. तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करते हुए की जाती है. तो यहाँ पर भी यही सीन है, यहाँ पर आपने मोल्स किसके यूज करने हैं, 2 रिएक्टेंट हैं बट लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स यूज करने हैं आपने. जब वो खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, राइट. सो अब एनर्जी निकालने के लिए वी नो दैट एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर तो मास है नहीं, सो वी कैन यूज द वॉल्यूम कांस्टेंट इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ओवर हियर? एक्चुअली वी हैव 2 वॉल्यूम्स ओवर हियर, सो वी नीड टू सम बोथ द वॉल्यूम्स. सो इट शुड बी 50 + 50, 100 वॉल्यूम है हमारे पास. C is the constant which is 4.18 and the temperature difference is 31 minus 17.7. Is this right, बच्चों? Yes, sir. चलें, तो 31 minus 17.7 will give you 13.3 into 4.18 into 100. It gives you the energy in joules. The energy in joules is 555
0.4 joules. As we know that we need to put the energy in kilojoules, so we must need to divide it by 1000, so it would be converted into kilojoules, so it would be 5.5594 kilojoules energy. We require number of moles as well. Over here, the volume and the concentration both are same for NaOH and HCl, so you can find out any one of them, right? So you must need to keep remember this whenever the volume in centimeter cube is given to you, and also along with you have concentration as well. So which formula of moles you are going to be used? Moles is equals to concentration into volume in centimeter cube. You must need to divide it by 1000, so it would be converted into decimeter cube. So the concentration is right now 2 and the volume is 50 over 1000, so it will be 100 over 1000. It will give you 0.1 moles of any one of them. HCl के भी इतने moles आएंगे और NaOH के भी इतने आएंगे, तो दोनों ही exact equal हैं. हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें लिमिटिंग और होगा. 1:1 का रेशियो है, तो दोनों के 0.1 मोल्स हैं, तो चल जाएगा. Both are same. So enthalpy change क्या हुआ आपके पास? It is the energy in kilojoules, which is 5.5594 over the number of moles of limiting reactant. It would give you 55.59 kilojoules per mole, and this is exothermic reaction, so definitely we need to place negative sign over here. So this is what enthalpy change of neutralization that you can even find out by the experiments, right bachcho? Yes, sir. Any problem to any one of you? All clear? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है. These are the energy in kilojoules, this is the energy in joules, this is the number of moles, this is the formula, everything is over here. If you want to ask anything, so you are allowed to ask. Yes, any one of you, any question? No question, right? So there should be some questions from myself, so I'm